Shivaji Patil, Adalrao Patil, yes. Thank you, madam. As per the answer given by Honorable Minister, the eco-sensitive area is declared to protect the importance of biodiversity Yes. and protect the wildlife and restore the historical value of the nature. At the same time, I would like to mention here that the very existence of the human life in eco-sensitive area is also equally important. For example, in my Western Ghat area where I come from, Bhima Shankar area in Pune district, Yes. tribal population have been living there since centuries. But due to this draft, ESA draft, people have been, they are put in a lot of trouble. So I would like to request, because there are so many projects have come in Western Ghat area, like Koyna Dam, Dimba Dam in Pune, Koyna Dam in Satara, because of which a lot of people have displaced the other places. So I would like to request whether recently we have had a lot of meeting with CCF as well as Dr. Godbole and other committee members to reduce the eco-sensitive area, particularly in Bhima Shankar zone. So whether that draft notification has been published or it has not been published. So I would like to request Honorable Minister, when are you going to publish the draft notification? And another important question, Madam, because in that area, more than 200 acres of the forest land has been illegally acquired by some illegal movement. And I have reported that to right from the Prime Minister to President to Honorable Environment Minister to Chief Minister, but nobody has taken importance of that important issue of encroachment of 100 acres of land and cutting the trees which is as big as 40 feet or 60 feet. And no action has been taken by government of Maharashtra as well as central government. So what is the government's move? Thank you. अध्यक्ष जी, कुल जितने एरिया मैंने बताए हैं प्रोटेक्टेड एरिया उसके अंदर 31 है, लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस वेस्टर्न घाट की आप बात कर रहे हैं वो वेस्टर्न घाट का नोटिफिकेशन अभी एक्सटेंड हुआ है 6 महीने के लिए। तमिलनाडु सरकार उसके संबंध में जवाब देना बाकी है, वहाँ से जवाब आते थे नहीं, सारे राज्यों के जवाब करीब करीब आ चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु थोड़ा बचा है। तो जैसे ही ये प्राप्त होगा वैसे ही हम इसके संबंध में फाइनल नोटिफिकेशन लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक तमिलनाडु का जवाब नहीं आएगा तब तक हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न घाट को पूरी एक यूनिट के रूप में देखना ज़रूरी है। हम उसे टुकड़े टुकड़े में नहीं देख सकते और उसकी समस्याएं कहीं सामान्य हैं, कहीं एक जैसी हैं, कहीं विविध हैं और उसके संबंध में 2 कमेटियां भी बन चुकी हैं। तो अब उसके ऊपर विचार करना और अंतिम निर्णय लेना शेष है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि ये 6 महीने के अंदर आने वाले समय में आप इसके संबंध में और विचार करें। मैंने सभी सांसदों से बात कर ली है, सभी राज्य सरकारों से बात करना शेष है, पूर्व में कर चुके हैं उनसे बात, एक बार और बात कर लेंगे और उसके बाद में निर्णय करेंगे। अनुराग ठाकुर जी।